बोले गणपति भगवान की जय। भवानी शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गुरुदेवेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहननयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ शिवा हरि ॐ शिवा 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 ॐ शिवा 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 ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय
शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. ओम शिवाय हरि ओम शिवाय ओम शिवाय हरि ओम शिवाय Om Shivaya Hari Om Shivaya. Om Shivaya Hari Om Shivaya. हरि ओम शिवाय हरि ओम शिवाय हरि ओम शिवाय हरि ओम शिवाय बोले मापति महादेव की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरहु कलेश विकार राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी है राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिन्हु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ओ महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ भद्र और ध्वजा विराजे कान्हे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंद तेज प्रताप महाजगवंत। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज ओ सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभारे। सहस बदन तुम्हरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि गोविंद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु त्रिलोकाहि मधुर फल जाना। प्रभु मुद्रिका मेहि मुख माहि जल दिलांगी गे अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते राम तुम्हारे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथ पे कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे तासु अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है पर सिद्धि जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। हरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाय जहाँ जन हरि भक्त कहाय।
और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीर। ओ बोलो जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाहि। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होई। जो यह पर हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा रिचेरा, की जय नाथ हृदय महादेव। हरि की जय नाथ हृदय महादेरा, की जय नाथ हृदय महादेव। पावन तनय संकट हरण, मंगल मूंगति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय में बसहूँ सुरभूप। बोले पवन सुत हनुमान की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय। Want to welcome all of you to Hanumanji, chanting of Hanumanji Chalisa at Bhavani Shankar Mandir live on this beautiful Tuesday evening. And to those in the temple as well, a few devotees are here this evening. Welcome to all of you. And we continue our journey to devotion to Hanumanji Maharaj and to Bhagwan Shivji. Today on this very beautiful evening, as the sun now makes his way into the temple to bless our day, to bless our presence, to bless, of course, this beautiful home of ours, we welcome you to the program on behalf of all our volunteers, all our servants, our priests. And we hope and pray that your day was good, and if not, this is a chance to make it extremely beautiful. As it is our new tradition established on Tuesdays, we will have Hanumanji Chalisa, chanting of chanting of Hanumanji Chalisa 11 times for our glorification of Hanumanji Maharaj, and more so for us to become closer to our Creator. Soon, in a few minutes, we'll show you the Alankar, the Shringar of Bhagwan Shivji today. It's another beautiful Alankaram of the Lord. And it depicts, of course, our team of Shivji. Shivji has so many associations. Last night you saw the fire lingam. Tomorrow you'll see space lingam. Then Saturday you'll see water lingam. So the Lord or the lingam is associated with all the elements. And so we pray and ask, my friends, that you embrace these forms of the divine. Bhagwan Hanumanji, he's Shankara Suvan Kesari Nandan. Shankara Suvan Kesari Nandan means he is the 11th incarnation of Bhagwan Shankar. Hanumanji is. And you notice when we sing 11 Hanumanji Chalisa, we glorify those 11 Rudras or those 11 forms. And so this evening we do that. We have finished one of the glorifications so far. And so we have 10 more to go. So this evening we will be wishing quite a few people happy birthday and all the best, of course, on your very beautiful celebration. And among the people we are wishing birthday is a dear sister of our temple who is in the temple today, Annette Abraham. She's in the temple today and did puja. It's nice to see you amidst the conditions here in the temple. Happy birthday to you. And hope and pray that Hanumanji Maharaj, of course, continue to bless you in life and to embrace devotion the way you do. So we're going to do the Alankar of Hanumanji, of Shivji Bhagwan. And let's get set to do that as we welcome Praniji some shank and bells. Om Bole Pavan Sutta Hanuman ki Jai, Siya Bhaj Ramachandra ki Jai. Everyone, please get ready to witness the beautiful Shringar of our Lingam today. Atulit Baladhamam Hema Shaila Badeham Dhanujavan Krishanum Jnanina Mragaganyam Sakal Gunanidhanam Vanarana Madhisham Raghupati Priya Bhaktam Vatajatam Namah Manojavam Marutatulya Vegam
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमते राक्षसान्तकम्। आञ्जनेयमतिपातलाननां काञ्चनाद्रिकमणीयविग्रहं पारिजाततरमूलवासिनीं भावयामि पवमानन्दनम्। ॐ हम हनुमते नमः। 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 बोले पवन सुत हनुमान की जय। सिया भज रामचंद्र की जय। So our form of Bhagwan Shivji today, the lingam is dressed in red and yellow. And red, of course, the color of Hanumanji Maharaj, sorry, red and white, the lingam itself. White is the color of Shivji, one of the colors of the Lord. Red is the color of Hanumanji Maharaj. The combination, or the beautiful, perfect combination, which shows us that, the mixture or the combination of those energies, Shiva and Hanumanji Maharaj, is beautiful for our life. And today we worship this beautiful form. Hanumanji Maharaj is actually worshipping the lingam today. And this is not the first time we see him doing that. We see him doing that in Rameshwar and many other places. Bole Umapati Mahadev ki jai. Let's start our Hanumanji Chalisa now. And this Hanumanji Chalisa goes out to Moneshwar and Prem Kumari Jut. Today, of course, they're celebrating their 37th wedding anniversary. Happy 37th wedding anniversary to Moneshwar and Prem Kumari Jut. We'd like to wish, of course, they're saying all of Bhavani Shankar Mandir members well, and the devotees' blessings as well. Through Hanumanji's blessings. Celebrating marriage is important in life. Celebrating anniversaries are important in life. Shri Guru Charan Saroj Raj Nij Man Mukur Sudhar Barno Raghuvar Vimal Jasum Jodayak Phalchari Buddhihin Tanu Janike Sumiro Pavan Kumar Bal Buddhi Vidya Deho Mohin Haraho Kalesh Vikar Jai Hanuman Gyan Gun Sagar Jai Kapish Tinhu Lok Ujagar Ram Dut Atulit Bal Dhama Anjani Putra Pavan Sutna Mahavir Vikram Bajrangi Kumat Nivar Sumati Kesan Kanchan Varan Viraj Suvesha Kanan Kundal Kunchit Kesha हाथ भद्र और ध्वजा विराजे कान्हे मूंज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि
हरि रंग जरा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाई सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिया भरत संभाई सहस बदन तुम्हरो यश गावे यस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राज पर तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर बन प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही जल्दी लांगी गई अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह अरे राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हाथ टेका भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीर संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम अरे और मनोरथ जो कोई लावे तासु अमित जीवन फल चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्धि जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहा हरि और देवता चित नगर ही हनुमत से ही सर्व सुख करहि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत वो बोलो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख जो यहाँ पर हनुमान चालीसा हो सीधी साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महादेव की जय नाथ हृदय महादेरा की जय नाथ हृदय महादेव पावन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय में बसहु सुरभूप बोले पवन सुत हनुमान की जय सिया भज रामचंद्र की चारों युग परताप तुम्हारा है पर सिद्धि जगत उजियारा चारों युग in all four ages O Hanuman ji not only in Kali Yuga but in all four ages परताप तुम्हारा your prayers
will bring, of course, relief and healing to people, to deities in all 4 ages. Hai parasiddhi jagat ujiyara. But, you know, penance is very important. I hope you stay tuned, because at the end of today's service, we will tell you about tomorrow's tapasya, what you're going to do. We're going to kick it up a notch a little bit, because siddhi, my friends, or blessings in life do not come by sitting on the couch and watching TV alone. We have to do a lot more than that. Bole Pavan Sut Hanuman ki jai ho, Siya Bhaj Ramachandra ki jai. The next is on behalf of Jairam Ramsaran and family. Of course, they're giving thanks. This is a family, they're giving thanks to Bhavani Shankar Mandir, and they mentioned this, that they're giving thanks to myself and family for bringing enlightenment in the form of Shanti Satsang to the community and to their family. Bhaiji Jairam Ramsaran, thank you very much. I know you, Nandini's brother, so you've always been a well-wisher of our temple and encouraging to me personally. That is what we need from all of you. Thank you so much for thinking about us, and it is a pleasure for us to do this for our community. No reward is necessary or important for us. This is our reward, to make our community happy. Bole Pavan Sut Hanuman ki jai ho. Shri Guru Charan Saroj Raja, Nij Man Mukur Sudhar, Barno Raghuvar Bimal Jasu, Jodayak Palchar, Buddhihin Tanu Janike, Sumiro Pavan Kumar, Bal Vidya Dehu Muhi, Harahu Kalesha Vikar. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिन्हु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ भद्र और ध्वजा विराजे, कान्हे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहार, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिया भरत संभाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, अस पे श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीशा, यम कुबेर दिगपाल चहाते, कवि को विद कही सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो, प्रभु मोदिका बिलुक मारे, जल्दी लागे अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो, आपै तीनों लोक हाकते कापै, भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत मीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, मनोरथ जो कोई लावे, तासु अमित जीवन फल पावे, चारों युग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्धि जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए, और देवता चित्त न डरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई, जो तहि बंदी महासुख होई, जो या पढ़े हनुमान चालीसा, सिद्धि
सा की गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महादेरा की जय नाथ हृदय महादेरा की जय नाथ हृदय पावन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय में बसहूँ सुर भूप बोले पवन सुत हनुमान की जय हो सिया भज रामचंद्र की जय। और नेक्स्ट हनुमान जी चालीसा Bhai Ji Nanlal Jairam and family giving thanks to Hanuman Ji for the strength to beat the odds, and that is what the message we got from the family. So apparently Hanuman Ji Maharaj has done wonderful magical things. This is not the first time, my friends, Hanuman Ji has done magical things. Ram Ji Bhagwan, remember Ram Ji? Bhagwan Ram had his brother in his hand. Lakshman was unconscious, shot with a javelin. Bhagwan Ram is Narayan, Bhagwan Ram is Prabhu. No one could have brought back the consciousness, my friends. No one else could have brought back consciousness to Lakshmana other than Ramji, other than Hanumanji. Well, Bhagwan Ram could have done some magic, some power and resuscitate his brother. But Hanumanji came in at the right time, and he brought, of course, he brought with him the magical herb, Mulsa Jivani and others. We always beat the odds when Hanumanji is on our sides. So, Nanlal Jairam and family giving thanks today to Hanumanji for the strength, of course, that he has blessed all of you with. Bole Pavan Sutta Hanuman ki Jai Shri Guru Charan Saroj Rajan Nij Man Mukur Sudhar Barno Raghuvar Vimal Jasum Jodayak Phalchar Buddhihin Tanu Janike Sumiro Pavan Kumar Bal Bodhi Vidya Dehu Muhi Harhu Kalesh Vikar Jai Hanuman Gyan Gun Sagar Jai Kapish Tinhu Lok Ujagar Ram Dut Atulit Baldhama Anjani Putra Pavan Sutnama Mahavir Vikram Bajrangi Kumad Nivar Sumati Ke Sangi Kanchan Varana Viraj Suvesha Kanan Kundal Kunchit Kesha Hath Bhadra Aur Dhwaja Viraje Kanhe Munj Jane Musaje Shankar Suvan Kesari Nandan तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक धरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिया भरत संभाई सहस बदन तुम्हारो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहीशा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राज पर दीन्हा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लीलोताहि मधुर पर जान प्रभु मोद्रिका मेरे मुख मान
अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे ते राम दुआरे तुम रखवारे। हो तन आज्ञा बिन पैसाज सब सुख लहे तुम्हारी चरना, तुम रक्षक काहू को तरना। आपन तेज समारो, आपे तीनों लोक हाथ पे कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आए। अरे महावीर जब नाम सुनावे, नासई रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीर, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, तासु अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, हे पर से जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलार, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का। और देवता चेत न डरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट कटे मीटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पात कर होई, जो कही बंदी महासुख हो। जो यहाँ पर हनुमान चालीसा, होय से दिसाती गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि सेवा, की जय नाथ हृदय महादेरा। की जय नाथ हृदय महादेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय में बसहूँ सुरभूप। बोले पवन सुत हनुमान की जय हो। और देवता चित्त न डरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। हनुमत से ही सर्व सुख करहि। Tulsidas ji used the word sarva sukh. And that has a big meaning in our life. We heard about sukh. The word sukh means happiness. But Tulsidas ji says, Hanumat se hi sarva sukh karahi. By worshipping Hanumanji Maharaj, sarva sukh, you get all forms of happiness. Which means that there is definitely more than one type of happiness in our life. Definitely. And what are these kinds of happiness? Right? There is, temporary happiness, permanent happiness, perennial happiness. All forms of happiness they are. And so Tulsidas ji says, worshipping of Hanumanji, aur devata chitna darahi, Hanumat se hi sarva sukh karahi. By worshipping Hanumanji Maharaj, he bestows all sorts of happiness in our life. My friends, happiness is something that we need in order to enjoy. At the dullest person, if you're dull in life and if you're sorrowful, no matter what comes in front of you, you will never enjoy it. You will never enjoy it if you are dull and if you're sorrowful. And that is why when you're happy on a day when it is gray, when the skies are gray, when you're happy on a day when it is snowing, on a day when things are rough, you will always enjoy every moment of that day when you're happy.
So Hanuman ji sarva sukh karahi. Bole Pawan Sut Hanuman ki jai. The next Hanuman ji Chalisa comes from Marie Kaulesar, who is always a well-wisher of our temple, and of course who is always a donor here in so many ways. Bole Pawan Sut Hanuman ki jai. Shri Guru Charan Saroj Raja Nij Man Mukur Sudhar Barno Raghuvar Vimal Jasu Jodayak Pal Char Buddhiheen Tanu Janike Sumiro Pavan Kumar Bal Buddh Vidya Deho Mohi Harahu Kalesh Vikar जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिन्हु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल हाथ भद्र और ध्वजा विराजे कान्हे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंत विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित सुनिवे को रसिया राम लखन सीता सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिया भरत संभार सास बदन तुमरो यश गावे यश कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपर दे तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु प्रभु मुद्रिका में मुख माही जल्दी लांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे राम दुआरे तुम रखवारे होत न अज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे तासु अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है पर सिद्धि जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुरी कंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुबर जाई जहाँ जन हरि भक्त का और देवता चित्त न डरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नगरी जो शतवार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख जो यहाँ पर हनुमान चालीसा हो सिद्धि साधी गौरी सा तुलसीदास सदा चेरा की जय नाथ हृदय हरे की जय नाथ हृदय महादेरा की जय नाथ हृदय पावन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय में बसहु सुरभूप बोले पवन सुत हनुमान की जय सियावर रामचंद्र की जय। Our next Hanumanji Chalisa is dedicated to celebrating 60th birthday today. And happy birthday greetings to Chitraka Singh from Vancouver, Canada. With Hanumanji's blessings for a very bright future. From her Didi, Sheila, sisters Leela, Champa, Shanta, brothers Netram, Rupan, and Drona. And loving sons Ron and Kevin. So happy birthday to you, Chitraka Singh from Vancouver. And of course, I've known this family through Auntie Leela, who has made tremendous connections with so many people for us. Happy birthday to you today. And I'm so glad that we can sing Hanumanji Chalisa on your blessed day.
Milestone birthdays are important. I think every single birthday is important to reflect and to give thanks for this greatest machine that God has given us. You know, we have our computers, we have our cars rather. We have to service them so very often. We have to read the manual in order to know how to operate it. We have to know, what to do, which buttons to press. Do we ever take care of this body? Do we know what the right buttons are to press in order to use this body to elevate to our Creator? My friends, we are doing the right thing here. Celebrating your 60th birthday, you are doing the right thing. And giving thanks to Bhagwan, of course, is the way forward. बोले पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिन्हु लोक उजागर। राम दूत यतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमत निवार सुमति के संग। कंचन वरण विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केश। हाथ भद्र और ध्वजा विराजे। कान्हे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप हर वेद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिया भरत संभाई। सहस बदन तुम्हरो यश गावे। हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते। कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। राम मिलाए राजपद दीन्हा। अरे तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही। जल्दी लांगी गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे दे। हरे राम दुआरे तुम रखवारे। होत नया ज्ञान सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू तो डरना। आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हाथ थे कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जप नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट से हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम और मनोरथ जो कोई लावे। दासु नित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा। है प्रसिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे।
तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवर पुर जाई, रहा जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न गई, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। बोलो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम। जो शत बार बात कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यहाँ पर हनुमान चालीसा, होय सिद्धि सांगी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महादेवा। कीजय नाथ हृदय महादेवा, कीजय नाथ हृदय महादेवा। पावन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय में बसहूँ सुरभूप। बोले पवन सुत हनुमान की जय हो, सिया भज रामचंद्र की जय। Happy birthday to you, Chandrika ji, and all the best, of course. Wishing us well always from Vancouver. We appreciate your encouragement and your support, and I'm glad that Bhavani Shankar Mandir can join in your 60th birthday celebration. Something surely to remember, in history, of course. Bhagwan's blessings on you. Next will be we will have number 7. Happy birthday going out to Nisha Pari. Nisha Pari is celebrating her birthday today as well, and she's known her for many, many years, and today she actually celebrates her birthday and reached out to us, well, just to make a contribution. And I say, you know what, on birthdays people should rejoice and celebrate. She has no expectation for her birthday, no desires, no wishes, just wants to give thanks to Bhagwan on her blessed day. Happy birthday to you, and Bhagwan's blessings always. We hope and pray that you're well, and of course our only wish and prayer is that the poison of COVID can go away, and we know that will slip away in time, with prayers and of course with care from people. With care from people. We will only take this thing away if all of us, my friends, are careful about how we live our lives. So happy birthday to you, and this is of course Nisha Pari. Family, extended family of mine, I must say, the Pari family. Bhagwan's bless you always. Bhagwan's blessings on you always. Stay well. Shri Guru Charan Saroj Raj, Nij Man Mukur Sudhar, Barno Raghuvar Vimal Jasu, Jodayak Phalchari Buddhihin, Tanu Janike सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि, हरहु कलेश विकार। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी है। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिन्हु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र भवन सतनाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। ओ हाथ भद्र और ध्वजा विराजे, कान्हे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवार। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए।
रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिया भरत संभार, सहस बदन तुम्हरो यश गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित यम कुबेर दिगपाल जहाते। कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। राम मिलाय राजपर, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र योजन पर मानो। लील्यो ताहि मधुर पल जानो। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जल दिलांगी गे अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख है तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हाथ पे कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संगत से हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। तासु अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा है। पर सिद्धि जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, हो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को भावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। हो और देवता चित्त न डरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुनिए हनुमत बल बीरा। बोलो जय 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 हनुमान गुसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाहि, जो शत बार पाठ कर कोई। छूट ही बंदी महासुख होय, जो यह पर हनुमान चालीसा। होय से दिशा की गौरी, तुलसीदास सदा हरिचय राखी। जय नाथ हृदय हर की जय नाथ हृदय महादेरा की। जय नाथ हृदय महादेव। पावन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय में बसहूँ सुरभूप। बोले पवन सुत हनुमान की जय। सिया भज रामचंद्र की जय। The next Hanumanji Chalisa is sponsored by Pitaji Dalip and Mataji Savitri. Wishing everyone Hanumanji's blessings, of course, at all times. They are always very supportive and very thoughtful of everything that happens at Bhavani Shankar Mandir. We would like to wish you all the best and stay healthy and stay safe, Pitaji Dalip and Mata Savitri ji. And hope and pray that you're well. And always, of course, wishing us well, always speaking positive, and always encouraging us to do well. Friends, you know, Hanumanji Maharaj, he always associates with everyone. Hanumanji Maharaj is associated with Ramji, of course. He is associated with Krishna Bhagwan because he sits on the top of Arjun's chariot. And, you know, he is associated with all, Durga, every one of them. He's associated with Surya. He's the Chela, you know, the student of Bhagwan Surya. Next week, time like this, my friends, next week, Tuesday, time like this, we will be starting in this Mandir, our Bhagavad or annual Srimad Bhagavad Katha. Bole Shri Krishna Chandra Bhagwan ki jai. Our annual Bhagavad Katha will be starting next week. And of course, this is something that we have always done outside, our outside Bhagavad Katha. Every evening we usually have 2-3 sets of shrotas and so on. Every evening, families, they would pay a sponsorship fee to the temple. This is how temples stay alive, awake, and vibrant. For me, vibrancy in a temple is more important than anything. Vibrancy drives a lot of activities in a temple. So next week, time like this, next week, Tuesday, time like this, we'll be, of course, chanting Sri Krishna's name from the Srimad Bhagavad Mahapuran for 7 consecutive nights. So I'm asking all of you, my friends, there are posters on Facebook. You can please contact me. You have my phone number. It's always on the screen.
If you'd like to become part of this sponsorship like a family for that night, please send me a text, please call me, and we can arrange for you to be here to sit as a family. And even if you are not here and you want to sponsor one night for the Srimad Bhagavad Katha, there is a process for that. You just let me know, and we'll include you in the process. God bless all of you who have supported us always, who continue to do so. And again, if you want to, be part of this Bhagavad process, let us know, my friends. And we'll start next week, Tuesday, 7 nights of Shri Krishna Katha. Bole Pavan Sutta Hanuman ki Jai. Shri Guru Charan Saroj Raja, Nij Man Mukur Sudhar, Barno Raghuvar Vimal Jaso, Jodayak Palchar, Buddhihin Tanu Janike, Sumiro Pavan Kumar, Bal Buddhi Vidya Dehu Muhi, Harhu Kalesh Vikar, Jai Hanuman Gyan Gun Sagar, Jai Kapish Tinhu Loka Ujagar, Ram Dut Atulit Baldhama, Anjani Putra Pavan Sutnama, O Mahavir Vikram Bajrangi, Kumat Nivar Sumati Ke Sangi, Kanchan Varan Viraj Suvesha, Kanan Kundal Kunchit Kesha, Hath Bhadra aur Gwaja Viraje, Kaane Mooj Jane Usaj, Shankar Suvan Kesari Nandan, Tej Pratap Mahajagvandan, Vidyavan Muni Ati Chatur, Ram Kaj Karibe Ko Adu, Prabhu Charit Sunive Ko Rasiya, Ram Lakhan Sita Man Hasi, Sukshma Roop Dhari Siyahi Dikhawa, Vikat Roop Dhari Lank Jarawa, Bhim Roop Dhari Asur Samhare, Ramchandra ke kaaj saware, O lai sajeevan lakhan jiyaye, Shri Raghuveer harsh ur laye, O Raghupati ki nahi bahut badhai, tum mama priya bharat samhare, Sahas badan tumharo yash gaave, As kahi Shripati kant lagave, Sankadik Brahmadi Munisa, Narad Sarad Sahit Ahisa, Yam Kuber Digpal Jahate, Kavi Kovid kahi sake kahate, Tum upkar Sugriv hi कीन्हा, Ram Vidaye Raj par दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, ओ युग सहस योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर बल जानु, प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही, जल दिलांगी गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाथ पे कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ओ नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, तासु अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्धि जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन
अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चेत न डरहि हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शत बार पाठ कर गोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यहाँ पर हनुमान चालीसा होई से दिशा की गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महादेरा की जय नाथ हृदय महादेरा की जय नाथ हृदय पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय में बसहूं सुरभूप बोले पवन सुत हनुमान की जय सिया भज रामचंद्र की जय. And we also now are going to extend happy 23rd birthday to Alisa Singh. Alisa Singh from your mom Sati, your dad Anand, your brother Austin. May Hanumanji Maharaj always shower his blessings upon you for long life, health and tremendous amount of happiness. Known Alisa for a long time. At one time she was very closely associated with the temple, younger age. And Alisa, we wish you nothing but the best of life and all that the best life has to offer. At this age, of course, it is important to do so many things, and this forum is obviously not to advise you about that, but to sit, of course, and send you the blessings of Sri Hanumanji Maharaj. May you always be close to your dharma, may you always continue to embrace your traditions and culture, and of course, may Hanumanji Maharaj always have his hands of blessings and protection over you. बोले पवन सुत हनुमान की जय. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुबर विमल यश जोदायक फल चारु बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिन्हु लोक रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा कान्हे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंत विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित सुनिवे को राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विगत रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति की भी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिया भरत संभाई सहस बदन तुम्हारो यश गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिषा यम कुबेर दिगपाल चाहते कवि कोविद कई सके कहते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग
सहस्र योजन पर भानु लीलोताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही जल्दी लांगी गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगमानुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो तो डरना आपद तेज समारो आपे तीनों लोक हाथ पे कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासय रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ा मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे तासु अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है पर सिद्धि जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरा अंत काल रघुवर पुर जाहि जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त नगर ही हनुमत से ही सर्व सुख करही संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल वो बोलो जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाहि जो शत बार पाठ कर कोई चूत ही बंदी महासुख हो जो यहाँ पर हनुमान चालीसा हो सिद्धि साकी गौरी सा तुलसीदास सदा हरिचे की जय नाथ हृदय महादेव तुलसीदास सदा हरिचे राखी जय नाथ हृदय महादेव की जय नाथ हृदय महादेव राखी जय नाथ हृदय महादेव पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय में बसहूँ सुरभूप बोले पवन सुत हनुमान की जय सियावर रामचंद्र की जय हैप्पी बर्थडे Alyssa enjoy your birthday and whatever is left of the evening and have a very pleasant one. God bless you always. Like to have two more. We'd like to send out Hanumanji's best wishes and blessings to Uncle Loki, or Loki Charan and Auntie Parvati or Auntie Data Tilak. This is Asha's parents in Florida. They're giving gratitude, sincere thanks to Hanumanji for significant blessings and well wishes in their life. Hanumanji, as you know, I have always said this about Mahadev. God has never let us down. God will never let us down. The only people who have let us down is ourselves, because we have created a level of expectation in our life without setting ourselves up in the proper way, right? And that is why I'm not a great fan when we say we leave everything in God's hands. I don't believe that stuff. I believe that my breath is God, my soul is God, my everything is God. But imagine you just have to leave everything in God's hands. What are you doing with life? What are we doing, right? If we're leaving everything in God's hand, we'll just wake up tomorrow morning and snack and watch TV all day and God takes care of the rest. Well, no. And that is why we do sadhana in life. We do sadhana in life. God is a booster, right? God is not a juice though, like the booster juice. God is a booster in our life. When we fall, He picks us up. But if you have never walked, how is God going to help, right? And we've seen that tremendously in our scriptures. It is not like we leave everything in God's hand. That is a very complacent way to live and a very lazy way to live. Just leave everything in God's hands. No. You've got to do something about it too. What about your hands? Sahasrabahu, remember, he has 1,000 hands. He had 1,000 hands. And instead of going and help 1,000 people, he is feeding himself all day with 1,000 hands. So you can imagine. Well, I don't know if he worked out or not, but that's a whole different story. But, don't leave everything in God's hands. You have to, do your best. You have to. God has confidence in our abilities. And that is why He's given mukti. As Hindus,
our ultimate goal is not nirvana, our ultimate goal is not God. According to Hinduism, our ultimate goal, our highest state of achievement is called mukti. And that is when we become free on this heaven that we're living in, on this life. This life is a test for the heavens. In the heavens, there's all kind of things happening there. This life is a test for the heavens. Let's make this heaven properly. Let's live in this heaven. And then, my friends, we pave the way for Vaikuntha. So, Bhagwan has never failed anybody. God will never fail anyone, my friends. But when failures come in life, or when disappointments come in life, you know what happens, right? We need someone to blame. So it's not me, because you're very good, you're innocent, you're hardworking, you have all the capabilities. Nothing is wrong with you. The planet bad. It's a wrong day, we pray to Hanumanji. Instead of Tuesday, we pray Wednesday, so Hanumanji, you know what I'm saying? So it's never us that we have taken responsibilities. God has never let down anyone in this life, and God never will. We see that with Arjun, we see that with the Pandavas. Sri Krishna Bhagavan stood there at the gate in Hastinapur. Bhagavan Sri Krishna stood there at the gate of Hastinapur like this when the Pandavas were walked out of their palace and driven to the exile. And he did nothing. He did nothing about it. Why he did nothing about it? Because God, Bhagwan Shri Krishna, was preparing the Pandavas for something bigger. Because they were living in their palaces, they were strong and they were mighty and all that. But he wanted to prepare them for something bigger. And you know what happened when they went to the forest? When you wonder what happened to them? Arjuna went and did penance to Shivji. You remember that story? When everyone is standing up on the ground and sitting on the mountains and doing penance, Arjuna made a bed of arrows with the tips up like this, because he's Dhanushadhari. And he stood up with one foot on the bed of arrows, and he's Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. He went to Somnath temple and did penance to Shivji. Bhim did penance, Yudhishthir did penance, Nakuls, all of them did tapasya. Just like you, I'm going to tell you how to go up another notch tomorrow with your tapasya at the end of the program. He sent them to the forest to prepare them. Sri Krishna Bhagavan stood there. He could have just do something. He's Yogeshwar. Do some kind of occult power thing and send them back to the palace. No. He was rich. Krishna Bhagavan was a king. He could have given them palaces to live in the forest or something like that. God has never let us down. God will never let us down. Remember this today. The only one who has ever let ourselves down is us. And so this is one of the messages we take away tonight from this Hanumanji Chalisa session. As you know, Tuesday nights I don't give really a lecture or a katha, but I give little antibiotics. Antibiotics, very little, but they're very effective, very effective. So you get little droplets of the blessings on Hanumanji's night, because that's what he is. And so we give thanks to Hanumanji on behalf of Auntie Data and Uncle Loki. Wonderful couple. I've happened to know them for many years. Always so helpful, gentle, soft-speaking. And, Auntie Data is such a motherly lady, and Uncle Loki is such a quiet man. So God bless you both. May Bhagwan Hanumanji continue to bless you both. Shri Guru Charan Saroj Rajam Nij Man Mukur Sudhar Barno Raghuvar Bimal Jasum Jodayak Phalchar Buddhihin Tanu Janike Sumiro Pavan Kumar Bal Buddhi Vidya Dehu Mohi Harahu Kalesh Vikaram Jai Hanuman Gyan Gun Sagar Jai Kapish Tinhu Lokaujar Ramadut Atulit Baldhama Anjani Putra Pavan Sutnama Mahavir Vikram Bajrangi Kumat Nivar Sumati Kesan Kanchan Varan Viraj Suvesha Kanan Kundal Kunjit Kesha Hath Bhadra Aur Dhaja Viraje Kane Muj Jane
सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि दंड जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिया भरत सम सहस बदन तुमरो यश गावे यस कहि श्रीपति कंदन गावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर बल जाना प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जल दिलांगी गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को लरना आपन तेज समारो आप तीनों लोग हाथ फेंकावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे तासु अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा हे पर सिद्धि जगत उजियार साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चित नगर ही हनुमत से ही सर्व सुख करेगी संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शत बार पाठ कर कोई जुग ही बंदी महासुख होई जो यहाँ पर हनुमान चालीसा कोई सिद्धि साथी वारिसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महादेव की जय नाथ हृदय महादेव की जय नाथ हृदय महादेव पावन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप
राम लखन सीता सहित हृदय में बसहूं सुरभूप। बोले पवन सुत हनुमान की जय, सिया भज रामचंद्र की जय। And I believe this is our final one now. Make sure we cover everyone here. Yep. So the final Hanumanji Chalisa goes out to Annette, who's here today, celebrating her birthday. Happy birthday to you again, Annette. So since you're here, you get to offer your flower yourself. And today Annette celebrates her birthday. Of course, for girls and ladies, we try to desist from saying how many years they're celebrating, but that's not important. Annette came to us through Shanti Satsang, and since then she's been associated with the temple as a devotee. And we want to wish her a happy birthday to you. Happy birthday to you, Annette, and glad you were able to do puja today under the circumstances, under the conditions that we have. And I always tell you this, said this last night and today again, that a day like our birthday is very special, where we give thanks to God for the greatest gift of life. We celebrate when we have things, right? A house, new house. You purchase a new house, you have housewarming and house cooling. I don't know what they have these days. New car, you take your friends out to drive. I don't know what else, new this, new that. You find a way to, show it to people. Well, when it's our birthday, it's a way to show that the greatest gift that was given on this earth to you is yourself. The greatest gift that was given on this earth to you is yourself. Not anyone else, not anything. Because with this, we can achieve anything. With this, we can go anywhere. With this, we can do anything that we want, good and bad. And that is what makes this so very unique. So, we give thanks today. And Annette, of course, give gratitude to Bhagwan. And of course, from her friends. And also give thanks to Shanti Satsang. And give gratitude for the beautiful life Bhagwan has blessed her with. Her parents are no more, but she gives thanks for the way she is actually raised by them. Let us join with Annette and sing Hanumanji Maharaj's praises, and of course wish her happy birthday. Shri Guru Charan Saroj Rajan Nij Man Mukur Sudhar Barno Raghubar Bimal Jaso Jodayak Phalchar Buddhihin Tanu Janike Sumiro Pavan Kumar Balabodhi Vidya Dehu Mohi Harhu Kalesh Vikar हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिन्हु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत हर महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हरे हाथ भद्र और ध्वजा विराजे कान्हे मूंज जने मूसाज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को प्रभु चरित सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान
अरे सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, अरे भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, ओ लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिया भरत संभाई, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। सहस बदन तुम्हरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपर दीन्हा, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर पर जानु, प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज लाए, हर दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हरे राम के दारे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहो तो डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ देखा, हरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। नाशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, दिन के काज सकल तुम साज, और मनोरथ जो कोई लावे, तासु अमित जीवन फल पावे, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। चारों युग परताप तुम्हारा है, पर सिद्धि जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, हरे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाहि, जहाँ जन्म हरि भक्त कहा, और देवता चित्त न डरहि, हनुमत से ही सर्व सुख है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल हो बोलो जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की दाई, अरे जो शत बार पाठ कर कोई, छूतहि बंदी महासुख होई, जो यह पर हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा रिचेरा, की जयनाथ हृदय मादेरा, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान।
लाल देह पावन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय में बसहु सुरभूप लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगुर वज्र देह दानोदलन जय 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 कपिसूर पवन सुत हनुमान की जय सिया भज रामचंद्र की जय. Happy birthday again, Hanumanji's blessings always. And to all the lovely people celebrating their birthdays again, happy birthday to you. I hope we have had some fun celebrating with Hanumanji Maharaj through singing of the Hanumanji Chalisa. And please remember this most complex, this most unique vehicle that God has ever created in this world. There's a manual for it. Please read the manual. The manual, many manuals for it. It is called the Hanumanji Chalisa. If you read and interpret the Hanumanji Chalisa in your own humble, simple way, you will understand better what the purpose of life is. In your own simple way. No complex understanding. Jai Hanuman Gyan Gunasagar. Victory to you, O Hanuman, who's the ocean of knowledge. What do you understand by that? If he has an ocean of knowledge, man, how much knowledge do we need to live in this life? A teaspoonful. That's all. Because if we get more than that, it's problems. He is Gyan Gunasagar. Jai Kapish Tihuloka Ujagar. Victory to you, Hanumanji, who's Teen Holoka Ujagar, master of the three worlds, past, present, future. Ramadut Atulit Baladhama. You're Ramdut, I can be Ramdut. Atulit Baladhama, you're so powerful, Hanumanji. Well, I need a little bit of that courage that you have. Right? Interpret it in your own way, and that becomes a manual of your life. Hanumanji's life becomes a manual of life. And what I always tell you about Hanumanji, the fundamental lesson of Hanumanji Maharaj. Fundamental lessons, three things. One, he is bhakti, Mangal Murti, bhakti roop. He is a walking form of devotion. When you want to be inspired by devotion, if at all you lack closeness of God, pray to Hanumanji. He gives you that closeness. One, devotion. Secondly, my friends, Hanumanji has never failed. He fell, but he never failed. And what does that mean? You will fall many times in life. I fell many times in life. You will fall many times in life. But don't consider it failure. As a matter of fact, every recorded action of Hanumanji, every recorded action of his, there was a block in his way. There's a block in his path. But, remember he was shot down by Bharat, taking medicine for Bharat's brother. He was shot down. When you're going to do good in life, you're going to be shot at. Well, that's fine. Take your arrows and move on. But don't fall. Right? And don't fail. If you fall, that's not failure. Falling is not failure. That's the second thing about him. He's never failed. And you shall never fail as well. And the third and final thing, there's many, many things about him. Like hundreds of lessons you can come up with. But the three fundamental one, full of devotion. And with devotion, you can do anything. He's never failed. And lastly, my friends, he takes many forms. Just like Hanumanji, you should as well. Remember, Bhima Rupa Dhari Asur Samhare Ramachandra Ke Kaji Savari. Bhima Rup, when it is time for Hanumanji to become big and tall like the mountain, he becomes big and tall like the mountain, and he shows the other problems of life, how tiny they are. You don't need to tell people that they're tiny and they're little. Do not ever do that. You're bringing yourself down low. But behave like you are big, not in a negative or egoistic sense. Somebody tell you something, somebody look at you, somebody do something. I'm bigger than that, right? And sometimes you have to become Mashaka Samana Rupa Adibhari. You have to become small and tiny as a fly. It's called humility. The third fundamental quality of Hanumanji Maharaj is Ashtrasiddhi. He can become anything he wants to become. Similarly, you can become anything that you want to become as well in life. Anything. You can become a success, you can become a failure, you can become a star, you can become a nobody. Not that anything is bad with any of the two, but you can become anyone you want and still make something good out of it. May all of you stay blessed and stay close to Hanumanji Maharaj. Next Tuesday, obviously, we will not have
Hanumanji singing, because next Tuesday is the first night of our Bhagavatam. So please become a sponsor if you live in the area and you want to sit for the puja like we always do. Text me and we will arrange it for you to sit. Obviously, we will not have bhojan and the whole works, but we will have nice Bhagavad Katha. The temple, hopefully by next week, will be fully painted. And the carpet will be installed after Janamashmi. So we will not have the carpet. I don't want to disturb our Katha for that. So you're going to have a nice fresh walls and ceilings, but same carpet, and you'll be sitting on chairs. So come on out for the Bhagavat next week. Remember, for Bhagavatam, my friends, a 7-session Katha is important. Why? After 7 days, what happened to the king Parikshit? After 7 days, of course, when the snake bit him, as he was in dhyanam, in meditation, it was like an ant's nest, and when you touch it, it all fell like this. He was already in the heavens after 7 sessions of Bhagavat. Bhagavatam has the ability to do tremendous amount of cleansing in our life. I hope you come out of the temple and enjoy the Katha. Speaking about cleansing, what is your sadhana for tomorrow? So we're going to top it up a little bit and make sure that you're doing something. Because people are complaining, Panji, I eat vegetarian food and it's already that too easy. Well, good. God bless all of you. So tomorrow what we'll do, there's so many things you can do for Shivji sadhana. So many things. But it has to be monitored. I will never put you in a sadhana and in a loose environment where I can, monitor you. You have to be monitored to do strict sadhana. And then if I tell you stuff on the air, people will ask all sorts of questions. So, what may? Peel will be going into state 3, so maybe we can have more people in Mandir. Well, let's hope Peel will go into state 3. I don't know if that's, is that passed already? Peel, is it? It's not passed. I see Auntie Leela, you know something, me no. So maybe Auntie Leela get inside information. Auntie Leela must text me and tell me where I come from now. So I'm going to make preparations. Not tell nobody do. We're going to do some sadhana. So tomorrow sadhana, don't try stuff like this if you can't, if you have health issues, don't try intense sadhana. Do your Shivji Puja, do your Om Namah Shivaya, and be happy with that. It's good enough if you fasted vegetarian food from Monday to next Monday because you have health issues, that is good enough for you. Fasting is according to 2 things. According to your willpower. So, although we physically are strong and your body can withstand, absence of food for days and not, still there's a lack of willpower. The minute you see, your little fried rice and things like that, you want some. So, if you don't have willpower, don't try this. But if you get a little bit or you want to, and again, if people are working and things like that, it's hard for them. So use your conscience or your common sense. So tomorrow, sadhana, we're going to have 2 meals, one in mid-morning, and your last meal will be at 3:40 p.m., regardless of North America or South America time. 3:40 p.m. and 3:40 a.m. is an important time for Hindus. 3:40 a.m. is called Brahma Muhurt. Oh, and you're talking about topping up? One morning we'll do Brahma Muhurt with you. Yeah, all of you complain, I sadhana so easy bandit. Have you eat vegetarian food all the time? Oh God. Well, no, hold on. I'm going to bring on 3:40 a.m. sadhana on you. But for tomorrow, wake up your pratakal, which is sandhyakal, which means puja is done earlier or between 5:40 and 6:20. Remember, sandhyakal is 20 minutes before sunrise and 20 minutes after sunrise. It supports whatever you're doing. If you're in a meditative state, it just supports it amazingly. So if you can do that. I know your working conditions. If you can do it earlier, then do so. When you do it at 3:40 one morning, we'll do it 3:40 coming up next week. And you'll see the amount, how it multiplies whatever you're doing. So tomorrow, Sandhyakal, morning time, do your sadhana, your puja, to Shivji Lingam, your japam. And tomorrow you have 2 meals, cooked meals. If you want to go fruit meals and so on, up to you.
But people, you have to ease into this thing. It's Wednesday, mid of the week, so you have mid-meal. Maybe early morning, a little breakfast. Vegetarian meal, if you can do vegetarian meal, don't do this. And then before 3:30 or at 3:40 rather, you have your last meal. And then for the rest of the afternoon, you can either have a fruit or fruit juice or something, but no solid food. Somebody texted me, Mr. Panerjee, can I blend up the rice instead and eat it? No. Sadhana is not about tricking the process. Sadhana is not about tricking the process. Now what happens, why is 3:40 important? 3:40 is when the universe changes, its course, not a course, but the way it moves. When food is consumed at 3:40, what happens? Your next Sandhya Kal, which is 20 minutes before sunset and 20 minutes after sunset, your body is in a state that can really soak up whatever you put inside in terms of your prayers. So, tomorrow as well, people took time off this week to do Sandhya, 1 week. Yesterday, two families meet me here and said, we take vacation this week to do sadhana. People from Guyana are doing sadhana, we're here now. So awesome for you. So why you what happened, Auntie Leela? Hey, Auntie Leela, how about coffee? What you want to drink coffee for? Okay, you can have a coffee. So 3:40, your last solid meal, and then at 20 minutes before 6 and 20 minutes after 6 p.m., you must do your meditation to Shivji. Those of you who can, if you're in a transit and so, don't do that stuff, you'll miss your stop. So go to your altar and sit in front of your lingam, and you do 40 minutes of meditation, 20 minutes before, 20 minutes after. Your meditation is not anything difficult that you have to pay and go on a course to learn. Meditation is when you sit in front of your Shivji lingam, and if you have a Spatik lingam, beautiful. If not, your stone lingam, any lingam that you have, you're just sitting in front of your lingam in silence. And you're just going to close your eyes, look at the lingam. When you close your eyes, you're seeing the lingam here, right here. Don't say anything, don't chant any mantras, just be in silence for 40 minutes in front of your lingam. And you'll start paying some dues as of tomorrow because it will get a little intense, your sadhana. That's the purpose, to start off slow and to get intense. So do that for tomorrow. Again, let me repeat, wake up early in the morning, do your prayers at Sandhya Kal in the morning, do your 3 rounds of Om Namah Shivaya, still 3 rounds of Om Namah Shivaya Japam. Your last meal should be before 3:40, and then you don't eat back a solid meal that day. You can have a banana or a fruit, and then at evening you can drink fluids, of course, water. Then in the evening before sunset, you do 40 minutes of meditation in front of your lingam. There's a tremendous amount of benefits for this, for the self, mentally, and how you carry yourself. I'm telling you, friends, after Monday, you're going to feel different in this whole process. Majority of you, by the way, are doing a whole month, and I'm so happy. I mean vegetarian food, and it's becoming so easy for people. So God bless all of you. And then when we talk tomorrow, I will tell you what we're doing Thursday. So prepare for something a little intense on, I know it's a long weekend in Canada, but we're going to prepare for something intense on Saturday morning, and I'll tell you what that is. God bless all of you, friends. Shivji sadhana is very important, very meaningful, and adds so much value to our life. So please be strict with your sadhana and be safe about it. That's all. Be safe about it. Bolye Mahapati Mahadeva ki jai. We will wrap up our satsang tonight with Aarti. Please stand. Yani kani chapapani janamantar kritani cha tani sarvani nashyantu pradakshinam pade pade. Om Jai Shivankara Swami Hare Shivankara Jai Shivankara
चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी, ओम जय शिव ओंकारा, ओम हरे 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 महादेव, ओम हरे 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 महादेव, ओम हरे 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 महादेव। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 हरि ओम। प्रेम से बोलो गणपति भगवान की जय, श्री गुरु महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, नवग्रह देवता की जय, सियावर रामचंद्र की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री यमुना मैया की जय, नौ दुर्गा माता की जय, सूर्य नारायण स्वामी की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय। प्रेम से बोलो सरस्वती माता की जय, महालक्ष्मी माता की जय, जयकारा शेर वालिदा बोल साचे दरबार की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो, सत्य सनातन धर्म की जय। सबको जय जय सीताराम। So as of tomorrow, the temple will be closed because of the repairs that are going on. The machines and so are here, and noise is going to be here. So the temple will be closed tomorrow until it will reopen again on Monday for the wedding. So from now until Sunday evening, temple is closed. Because we are going through some significant repairs here, and machines are everywhere and things are everywhere, so it's not safe for people to be here. Continue to pray, continue to stay online and be with us. And all of you, your Rudrakshmala, please remember to wear them. It's very important. I'm trying to get some authentic ones to dress the murti and to do the blessing on them and get them to you if you like to purchase them. A lot of people don't have authentic Rudrakshmalas, so we'd like to get some for you. And I have a handful which I can get. So anyways, God bless all of you. Stay blessed always, and see you tomorrow evening, 7 p.m.